Assalamu alaikum. Good morning, dear students. I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin A Long Walk Home, page number 128. A long walk home mean घर की तरफ एक लंबी चहलकदमी. A long walk, लंबी चहलकदमी, home घर की तरफ. I grew up, मेरी परवरिश हुई, मैं पला बड़ा, मैं बढ़ गया. In the south of Spain, स्पेन के जुनूबी इलाक़े में. In a little community, एक छोटी सी बिरादरी में, एक छोटे से कस्बे में. Called Estepona, जिसको एस्टेपोना कहा जाता था. एस्टेपोना नामी एक छोटे से कस्बे में मेरी परवरिश हुई. I was 16, उस वक़्त मेरी उम्र 16 साल थी. When one morning my father told me, जब एक सुबह मेरे वालिद ने मुझे बताया, I could drive him into a remote village called Mijas, कि मैं उनको मोटर कार में ले जाऊँ एक दूर दराज गाँव को जिसको मिजास कहा जाता था. मेरे वालिद ने मुझे कहा कि आप मुझे मोटर कार में एक दूर दराज गाँव ले जाए जिस गाँव का नाम मिजास है. About 18 miles away, जो तकरीबन 18 मील दूर था. On the condition, इसी ही शर्त पर, और एक शर्त लगाया, that I'll take the car to be that I take the car to be serviced at the nearby garage, कि मैं इस मोटर कार को एक करीबी गैराज ले जाकर वहाँ इनकी सर्विस करूँगा. ये शर्त भी लगाया. Having just learned to drive, having just learned, चूँकि मैंने अभी अभी सीखा था, to drive, ड्राइवरी करना मैंने अभी अभी सीखा था. And hardly ever having the opportunity to use the car, and hardly ever having, और मुझे बमुश्किल मिल जाती थी, the opportunity, ये मौका, to use the car, कि मैं मोटर को इस्तेमाल कर लूँ. मोटर इस्तेमाल करने का मौका मुझे बमुश्किल मिल जाता था. I readily accepted, मैंने फ़ौरन कबूल किया इस शर्त को कि ठीक है मैं आपको ले जाऊंगा और वहाँ गाड़ी की सर्विस भी कर लूँगा. readily मीन फौरी तौर पर मैंने इसको कबूल किया. I drove dad into मिजास, मैंने वालिद को मिजास तक मोटर कार के ज़रिए ले गया. ड्राइव, ड्रो, ड्रेवन, ड्रो सेकंड फॉर्म है, मैं वो मोटर कार के ज़रिए ले गया. And promised to pick him up at 4 PM, और उसके साथ वादा किया, promised, वादा किया कि मैं उनको 4 बजे दोबारा उठाऊंगा, वापस आकर यहाँ से फिर रवाना होंगे. Then drove to the nearby garage, और इसके बाद मैं करीबी गैराज को गया. हमारा जो करीबी गैराज था, जब मैंने उनको वहाँ पर ले गया तो वहाँ करीबी गैराज था, उनको गया. And dropped off the car, और वहाँ पर मोटर कार को रुकवा लिया. Because I had a few hours to spare, because क्योंकि I had a few hours, मेरे पास चंद घंटे थे, to spare, जो फारिग थे, मेरे साथ चंद फारिग घंटे थे. I decided to catch a couple of movie, तो मैंने फैसला किया कि चंद मूवी देख लो. To catch मीन के देख लो. A couple of movie, दो फिल्में, couple जोड़ा, दो फिल्में देख लो. At the nearby garage, करीबी गैराज में मैंने फैसला किया कि वहाँ एक दो फिल्में देख लो. However, ताहम, I became so immersed in the film, मैं फिल्मों के देखने में इतना मगन हो गया, इतना गर्क हो गया, इतना मसरूफ़ हो गया, that I completely lost track of time, कि मैं मुकम्मल तौर पर वक्त को भूल गया. ट्रैक ऑफ टाइम मीन वक्त की जो ट्रैक थी, रास्ता थी, ये मैं भूल गया और वक्त का अंदाज़ा मुझे नहीं हुआ. When the last movie had finished, जब आखिरी मूवी ख़त्म हो गई, दूसरी फिल्म ख़त्म हो गई. I looked down at my watch, तो मैंने अपने घड़ी की तरफ देखा. It was 6 o'clock, तो 6 बजे थी. I was 2 hours late, मैं तो 2 घंटे लेट हो गया था, क्योंकि मेरे वालिद को मैंने 4 बजे बताया था और ये 6 बजे थी. I knew, मैं जानता था, Dad would be angry, कि वालिद मुझे बहुत गुस्सा होगी. If he found out, अगर उन्हें ये पता चला, I had been watching movies, कि मैं फिल्में देख रही थी, अगर उन्हें ये पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी. He'd never let me drive again, और वो मुझे कभी भी दोबारा गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं देगी. I decided to tell him,
تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو بتاؤں گا، اپنے والد کو بتاؤں گا دیٹ دا کار نیڈیڈ سم ریپیئر، کہ اس موٹر کو کچھ مرمت کی ضرورت تھی، اینڈ دیٹ دے ہیڈ ٹیکن لانگر، اور یہ کہ اس نے زیادہ وقت لیا، اس مرمت نے زیادہ وقت لیا، دین ہیڈ بین ایکسپیکٹڈ، جتنا اس کی توقع تھی مرمت کرنے کی، توقع سے زیادہ اس نے وقت لے لیا۔ I drove off to the place where we had planned. I drove off، میں نے گاڑی چلایا، to the place، اسی جگہ کو، where we had planned، جہاں ہم نے منصوبہ بندی کیا تھا کہ میں 4 بجے ادھر آؤں گا، to meet، ملنے کا، جہاں ہم نے ملنے کی منصوبہ بندی کی تھی، and saw dad waiting patiently on the corner، اور میں نے اپنے والد کو دیکھا جو پیشنٹلی انتظار کر رہا تھا، صبر کے ساتھ انتظار کر رہا تھا اس کونے میں۔ I apologized for being late، میں نے لیٹ یا دیر سے آنے کی معافی مانگی، and told him، اور اسے بتایا، that I had come as quickly as I could، کہ میں اتنا جلد آ جاتا جتنا میں آ سکتا تھا، but the car had need some major repair، لیکن اس موٹر کو کچھ اہم مرمت کی ضرورت تھی۔ I'll never forget the look he gave me، میں کبھی بھی وہی نظر کبھی بھی نہیں بھول جاؤں گا جو اس نے مجھے دیا، اس نے مجھے جس نظر سے دیکھا تو وہ نظر میں کبھی بھی نہیں بھول جاؤں گا۔ I'm disappointed that you feel you have to lie to me، I'm disappointed، میں نا امید ہو، that you feel، کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں، you have to lie to me، کہ آپ مجھے جھوٹ بولے، جیسن یعنی والد نے اسے کہا کہ میرے بیٹے جیسن، میں اس بات پر نا امید ہے کہ آپ مجھے نا امید ہو کہ آپ مجھے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی پر میں نا امید ہو۔ what do you mean I'm telling the truth، تو جیسن نے کہا کہ آپ کا کیا مطلب ہے اس سے، میں تو سچ بول رہا ہوں۔ so dad looked at me again، والد نے دوبارہ مجھے اسی ہی نظر سے دیکھا، جس خطرناک آنکھوں والے نظر سے۔ when you did not show up، جب تم نے شو اپ نہیں کیا، بروقت آپ نہیں آئے۔ I called the garage، تو میں نے اس شعبہ کو کال کیا، گیراج کو کال کیا، to ask، تاکہ اس سے پوچھ لو، if there were any problem، کہ کوئی مسئلہ ہے یا کیوں آپ لیٹ ہوئے 4 بجے سے۔ and they told me، اور انہوں نے مجھے بتایا شعبے والوں نے، that you had not yet picked up the car، کہ آپ نے ابھی تک کار کو نہیں لے گیا ہے، کار تو وہاں کھڑا ہے۔ so you see، اس لیے تم جانتے ہو، تم دیکھتے ہو، I know there were no problem with the car، میں جانتا ہوں کہ کار میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، موٹر میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ a rush of guilt ran through me، a rush of guilt mean قصور کی ایک لہر، گلٹ مین قصور، رش ایک لہر، رن تھرو می مجھ پر چلا گیا، میرے جسم میں قصور اور مایوسی کی ایک لہر جو تھی وہ دوڑ گئی۔ ایز آئی فیبلی کنفیسڈ، جون ہی میں نے دھیمی آواز میں یہ کنفیسڈ کیا، یہ قبول کیا، مائی ٹرپ ٹو دا مووی تھیٹر، کہ میں نے مووی تھیٹر کو چکر لگایا تھا، اینڈ دا ریئل ریزن فار مائی ٹارڈینس، اور میں نے ان کو اصل وجہ بتایا میرے سستی کا، کہ میرے ٹارڈینس مین سستی کی اہم وجہ کیا تھی۔ ڈیڈ لسن انٹینٹلی، ڈیڈ نے میرا سارے باتیں بہت غور سے سن لیے۔ ایز a sadness passed through him، جون ہی ایک پریشانی اس پر گزر گئی، اور یہ سنتے ہی اس پر ایک پریشانی سی گزر گئی۔ I'm angry not with you but with myself، اور ڈیڈ نے کہا کہ میں غصہ ہو، I'm angry، میں غصہ ہو، not with you، آپ کو غصہ نہیں ہو، but with myself، میں اپنے آپ کو غصہ ہو، you see، تم دیکھتے ہو، I realize that I have failed as a father، میں نے یہ محسوس کیا کہ بطور والد میں ناکام ہو گیا ہو۔ if after all these years you feel that you have to lie to me، کہ ان تمام عمر کے باوجود، ان تمام سالوں کے باوجود آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ مجھے جھوٹ بولے، یعنی میں نے آپ کی صحیح تربیت نہیں کیا اور آپ مجھے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ I have failed، میں ناکام ہو گیا ہو، because I have brought up a son، کیونکہ میں نے ایک ایسے بیٹے کی پرورش کی ہے، brought up mean پرورش کرنا، a son ایک ایسے بیٹے کی،
who can't even tell the truth to his own father, जो अपने वालिद को भी सच नहीं बता सकता है, ऐसे बेटे की मैंने परवरिश की है। I'm going to walk home now, अभी मैं घर जा रहा हूँ, and contemplate, और मैं ये गौर फिक्र करूँगा, ये मुराक़बा करूँगा, where I have gone wrong all these years, कि मैंने इन तमाम सालों के दौरान कहाँ पर ये गलती की है, अपने तमाम ज़िंदगी में कहाँ पर ये गलती की है कि मैंने अपने बच्चे को भी सही रास्ता नहीं सिखाया और वो मुझे झूठ बोलने पर आमादा होते हैं, तो मैं इसी ही बात पर गौर व फिक्र करूँगा। बट डैड इट्स 18 माइल टू होम, लेकिन वालिद ये घर को 18 मील तक रास्ता है। इट्स डार्क, और अंधेरा भी छा गया। यू कैंट वॉक होम, तुम तो पैदल नहीं जा सकते हो 18 मील, जेसन ने अपने वालिद से ये कह दिया। माई प्रोटेस्ट, माई अपॉलोजीज, मैंने एहतिजाज किया, जेसन कहता है, मैंने उनसे मुआफ़िया मांगे। एंड द रेस्ट ऑफ माई अटरेंसेज, और मेरे बाकीमानदा, रेस्ट ऑफ मीन बाकीमानदा, अटरेंसेज इल्तिजाए बातें, वर यूज़लेस, ये सब यूज़लेस थे, मुफीद नहीं थे, गैर मुफीद थे, बेकार थे, यानी मेरे वालिद पर कुछ असर नहीं कर रहे थे। आई हैड लेट माई फादर डाउन, मैंने अपने वालिद को मायूस कर दिया था। एंड आई वॉज अबाउट टू लर्न वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल लेसन, और मैं ऑफ माई लाइफ, और मैं अपने ज़िंदगी के एक बहुत ज़्यादा तकलीफ देह सबक सीख रहा था। एंड आई वॉज अबाउट, और मैं करीब था, टू लर्न के सीख लो, वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल लेसन, एक ज़्यादा तकलीफ देह सबक ऑफ माई लाइफ, अपने ज़िंदगी के। डैड बिगेन वॉकिंग अलॉन्ग द डस्टी रोड, वालिद ने इस गर्दलूद रोड के साथ चलना शुरू किया, पैदल चलना शुरू किया। वॉकिंग मीन पैदल चलना। आई क्विकली जम्प्ड इन द कार, जो ही वो पैदल रवाना हुए तो मैं फ़ौरन मोटर कार में सवार हो गया। जम्प्ड इन मीन चिल्लांग लगाया, सवार हो गया। एंड फॉलोड बिहाइंड, और इसके पीछे चलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी भी इसके पीछे चलाता रहा, उसका ताक़ुब करता रहा, पीछा करता रहा। होपिंग, मैं ये उम्मीद कर रहा था, ही वुड रिलेंट, कि वो नरमी इख्तियार कर लेंगे। रिलेंट मीन नरमी, कि वो नरम हो जाएगा, नरमी इख्तियार करेगा। आई प्लीडेड ऑल द वे, मैंने उन्हें इल्तिजाए किए। प्लीड मीन इल्तिजा करना, ऑल द वे, सारे रास्ते पर मैंने उनको बहुत ज़्यादा इल्तिजाए किए। और टेल हिम हाउ सॉरी आई वाज, और उन्हें बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात पर। बट ही सिंपली इग्नोर्ड मी, लेकिन उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया, मेरे तरफ कोई तवज्जो नहीं दे दिया। कंटिन्यूइंग ऑन साइलेंटली, और जारी रहा अपना चहलकदमी उसने जारी रखा खामोशी के साथ। थॉटफुली, फिक्रमंदी के साथ। एंड पेनफुली, और दर्द भरे अंदाज में वो जा रहा था, क्योंकि वो तो बूढ़ा था, उनके जाना भी आसान नहीं था। फॉर 18 माइल आई ड्रोव बिहाइंड हिम, और इन 18 मील तक मैं उनके पीछे गाड़ी चलाता रहा, आहिस्ता स्पीड से। एवरेजिंग अबाउट 5 माइल्स पर आवर, और हमारा औसत रफ्तार तकरीबन 5 मील फी घंटा के हिसाब से था। सीइंग माई फादर इन सो मच फिजिकल एंड इमोशनल पेन, सीइंग, जब मैंने देखा, माई फादर, अपने वालिद को, इन सो मच फिजिकल एंड इमोशनल पेन, इतनी ज़्यादा जिस्मानी और जज्बाती अजियत में अपने वालिद को देखकर, तकलीफ़ में अपने वालिद को देखकर, वाज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग एंड पेनफुल एक्सपीरियंस, ये सबसे ज़्यादा अजियतनाक और तकलीफ देह तजर्बा थी। या डिस्ट्रेसिंग मीन अजियतनाक एंड पेनफुल मीन तकलीफ देह एक्सपीरियंस थी। दैट आई हैव एवर फेस्ड, जो मुझे कभी, जिसका सामना मैंने किया था, मैंने इतने अजियतनाक और इतने तकलीफ देह तजर्बे का सामना कभी नहीं किया था। हावेवर, ताहम, इट वाज आल्सो द मोस्ट सक्सेसफुल लेसन, ये सबसे कामयाब तरीन सबक भी था। आई हैव नेवर लाइड टू हिम सिंस, उस वक्त से लेकर अभी तक मैंने कभी भी उनको झूठ नहीं बोला है। So dear student, that was the lesson, a long walk home. You should try to listen it so many times in order to get full command upon it, and try to share it with all your class fellows and friends and relatives who are in first year, so that they could also benefit from the videos, and share it in all your group as well. Thank you so much. Khuda Hafiz.